Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives out. So yesterday we saw that there was some decline in the market. Market was down by 57 points, and we closed almost near 18,107 level. So looking at yesterday's chart, we believe that before that we have seen some amount of rally where Nifty climbed above 18,100 level. So yesterday's rally, we are sensing that should be as a breather, and eventually the rally towards 18,300, 18,500 is very much on cards, and we believe that should be the higher side target for the index. Right now, the market is in very tight range of 18,000 to 18,300 levels. So even though if there is some amount of selling, the markets will find support near 17,800 levels. So bias is positive, but right now for the day specific, maybe for 1 or 2 days, there will be a sideways momentum with immediate supports as 18,000 and 18,300 levels. So sooner or later, we expect the breakout on the higher side. Coming to Bank Nifty, even the Bank Nifty saw some pressure in yesterday's session. The Bank Nifty was down by 129 points, closing at 42,328 levels. So basically, the advanced decline ratio was positive yesterday, but then even the candlestick pattern or the technically, it is still in a range bound kind of set. The range is 42,000 and 42,800. This 42,800 is the 50-day moving average on the higher side. So as long as the price doesn't move above 42,800, it will be in a sideways consolidation phase. We are sensing this Bank Nifty is more of a time-wise correction rather than a price-wise correction. So even if 42,000 levels are broken, 41,500 is the next support levels. These stocks like Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank from the private counters are looking strong. So we believe that this should gain strength to the Bank Nifty, and Bank Nifty should be heading higher in the coming trading sessions. So bias for both the indices are positive, but for the day 1 or 2 day, we maintain there will be some more sideways consideration in the process. Coming to this derivatives data, Nifty futures have witnessed long unwinding to the tune of 4.35%, which was a reduction of 5.99 lakh shares. The put call ratio, which was up from 1.35, has come to 1.16. Little bit of slowdown, but as long as the ratio is above 1, we are very positive on the from the PCR point of view. The major additions were seen in the 18,200 and 18,300 call options. So that is the resistance, and 18,100 put option. So that should be the support. In Bank Nifty, the new longs were added to the tune of 5%, which was the increase in OI by 1.14 lakh shares. The PCR has declined from 1.06 to 0.97. So the ratio has come below 1. So we'll be little cautious. The major additions were seen at 42,400 call option and 42,500 call option. So that should be the resistance. And lower side 42,300 put option. So that should be the support for the. And coming to the FI data, so yesterday the FI sold close to 4,550 contracts. They are net short by 1,100 contracts, which is very nominal. And this long short ratio is at 50%. They are they are neither on the long side, neither on the short side. So maybe next couple of days, looking at the data, we will be very clear whether the FIs are building a long position or short position. Right now, it's 50% neutral. Uh, the few long builders which are seen were Polycab, Coforge, and VDL, whereas the short builders were seen in the Torrent Pharma, India Mart, and Gujarat Gas. The stocks to watch is we are liking the capital goods space. Within that, L&T is something which is very strong. It has given a multi-year kind of breakout. The long-term charts are very positive. So L&T is one thing. Oil and gas is something which we are liking. So within that, ONGC is also very strongly placed. Technically, it is looking positive. And in PSU Bank, Canara Bank, and Bank of Baroda are very strongly placed from the technical point of view. So one can keep a watch on that. Lastly, the IT. Within the IT, Infosys and TCS we are liking. So we can keep a watch on this particular stock. So that's all for me. I'll hand over to Bunty sir for more research update. Thank you. Thank you, Bridges sir. Good morning, team. A few updates from my side.
starting with first Surya Roshni. Surya Roshni has bagged an order of around 147 crores from IOC and GAIL India for supply of API SL coated pipes and power coated pipes. With this, now the order book stands at around 850 crores. So that bodes very well for the Surya Roshni, and we are positive with a buy rating and a target price of around 710 rupees. Secondly, on the TCS, TCS has shared that they has been selected by Bombardier Canada-based jet manufacturer as its key strategic IT partner to accelerate the digital transformation process. As a part of this deal, TCS will modernize the legal system by deploying and integrating new system to support engineering, manufacturing, and defense activities, which will drive innovation and growth. Although size and tenure of the deal has not been disclosed, we believe this bodes very well for the ITC and among the IT packs. Uh, Next is on the Maruti. Maruti has shared that they have started exports of its premium SUV, that is the Grand Vitara, and the first shipment of this Grand Vitara sailed to Latin America from the Chennai recently. The company aims to export the Grand Vitara to more than 60 countries across Latin America, Africa, Middle East, Asia, and the neighboring regions. By adding this Grand Vitara, company now export approximately range of 17 vehicles. So this this bodes very well and it's positive for a Maruti. As a stock performance, we still have a hold rating with a target price of 10,047 rupees. Next is on the M&M. M&M has said that Maharashtra government has approved its proposal to set up a 10,000 crore electric vehicle plant in Pune under the state's industrial promotion scheme for EVs. The company, through its subsidiary, which will make this investment over a period of 7 to 8 years for setting up the manufacturing facility, development, and production of its upcoming born electric vehicles. This bodes or this is very much positive for Mahindra and Mahindra, and among the among the auto sector. We are very much positive and bullish on Mahindra with a buy rating and target price of 1495. Next is on the Indian hotels. Indian Hotels has announced that they have opened the Barga Resort and Spa Hotel in Manali, Himachal Pradesh, which is the tourist place. Barga will be under company's selection brand, and the hotel will be occupied with 33 rooms. This opening is in line with Indian Hotel strategy of strengthening its presence in Himachal Pradesh, which is more kind of a tourist place and which has a tremendous tourism potential. With the addition of this hotel, now Indian Hotels will have four hotels in Himachal Pradesh with one under development. So this is a positive news for Indian Hotels. Though the stock has run up like this, so we have a hold rating on the stock with a target price of 347. Lastly, on the Bata, company has announced that the board of directors has appointed Mr. Anil Somani as the CFO of the company, Chief Financial Officer. Though the date of joining is not declared yet, but if we see Mr. Somani is a qualified CA and prior to joining Bata, he was with Reliance Retail, serving as Executive Vice President and CFO of their digital business. Also, he has a overall 25 years of experience in finance, strategy, compliance, information management with some reputed names like Chroma, Walmart, Metro Cash and Carry. So this seems to be a very experienced guy, and this goes very well with the Bata as a in this line. So we have a buy rating on the stock with a target price of 2071. That's it from my side. Over to you, Vikas sir. Thank you, Banti sir. Good morning, everyone. Further news updates are Hindustan Unilever board had approved an increase in royalty and central service arrangement for the provision of technology, trademark license, and services with the Unilever Group. The new arrangement envisages increasing royalty and central services fee to 3.5% of turnover into a staggered manner over a period of 3 years from 2.65%.
Sun Pharmaceuticals Industry company will acquire US-based Concert Pharmaceuticals for $576 million in cash to gain access to an experimental drug for treating patchy baldness. Coal India, a Commission for Air Quality Management, has asked the central-run Coal India Limited to stop the supply and sale of coal to industrial units and other commercial organizations except the thermal power plant in the National Capital Region. Tata Motor is in talk with global investor to raise at least 500 to 600 million more for its fast-growing electric vehicle business, just over a year after it received $1 billion from TPG's Rise Capital Fund and Abu Dhabi State Holding Company. And lastly, Welspun Corp, the company on Thursday received rupees 92 crore as part of the total consideration of rupees 123 crore from the sale of land and civil structure, excluding plant machinery in Gujarat Lakshmi Organic Industry Limited. The company had received rupees 31 crore in October. That's it from my end. I hand over to Brijesh sir for further updates. Yeah, so the few more news updates. The news in HUL. So there was a result which came on Thursday. The result was 12% higher and the quarterly net profit, with the maker of household goods gaining from higher demand for products and easing inflationary pressure. The company board has also approved an increase in payout to the European parent Unilever for providing the technology, trademark license, and the services. The new arrangements which will be effective from February will be in force for the period of 5 years. So meanwhile, the HUL standalone net profit has climbed to 2,505 crores for the 3 months ended 31st December. From the previous price of 2243 crores as a year earlier. Next is on Hindustan Zinc, which is subsidiary of Vedanta. On Thursday, they said that the consolidated net profit of rupees 2156 crores for the December quarter, which is 20% lower than 2701 crores reported a year ago. The company also informed that the company chairperson and director Kiran Agarwal has stepped down with effect from 18th Jan 2023. L&T Tech Service, L&T Technology Service on Thursday reported a 22% rise in net profit to rupees 303.6 crore for the December 22 quarter. This is against a net profit of 248.8 quarters in the year ago. L&T Tech Service said in a regulatory filing. So, and the revenue of the company has grew by 21.4% to rupees 2048 crores in a quarter under the review from 1.68 crores as compared to a year ago. Next is on BHEL. On Thursday, the company has won an order for the renovation and modernization of steam turbines at Ukai Thermal Power Station in Gujarat. The order value 300 crores is for the 200 megawatts of Unit 3 and the 210 megawatts of Unit 5 of the Ukai Thermal Power Station. The order has been placed on BHEL by Gujarat State Electricity Corporation Limited. So actually, the BHEL is also the original equipment manufacturer, the OEM of these turbines. It is expected to extend the life and reliability of the units 3 and 5 at Ukai. Next is on Jubilant FoodWorks. The company on Thursday it has said that it will invest 900 crores over the 12 to 18 months to expand the Domino's and the Popeyes outlets, improve digital infrastructure, and add food commissionaries, back-end units which service its restaurant kitchens. The Jubilant FoodWorks currently has a network of 1,701 Domino restaurants across 371 cities in India. Basically, and they are planning to develop and operate the more brands in India, Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. And they are going to open the fresh 250 Domino's stores in the next 12 to 18 months and 3,000 outlets of pizza chain in the medium term. So that should be a positive news for the Jubilant. Next is on JSW Energy, and they are back 2 battery energy store system projects from SECI. JSW Energy it is an arm. JSW Renewable Energy 5 has
So basically, this is they have bagged the 2 battery energy storage orders, which is a capacity of 500 megawatts and 1000 megawatts from the Solar Energy Corporation of India. And lastly, the IFL management, they approved the bonus of 1-for-1 shares, 2-for-1 stock split, and rupees 17 per share as an interim dividend. So that's all from mine. I'll hand over to Kshitija for the Hindi updates. Thank you. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. सो फर्स्ट अपडेट जो है कि सूर्या रोशनी जो कंपनी है उनको ऑर्डर मिला है 147.3 करोड़ का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड गेल इंडिया, जो सप्लाई करेंगे एपीआई एसएल कोटेड पाइप्स एंड पावर कोटेड पाइप्स. और जो नाउ उनका जो ऑर्डर बुक है वो स्टैंड है कर रहा है 850 करोड़ का. करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 710. देन टीसीएस के ऊपर अपडेट है. टीसीएस का सिलेक्शन हुआ है बॉम्बार्डाइडर कनाडा बेस्ड जो जेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए, जो की स्ट्रेटेजिक आईटी पार्टनर होंगे और एक्सेलरेट करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ये डील के साथ टीसीएस मॉडर्नाइज करेगा लीगेसी सिस्टम और डिप्लॉय करेगा और इंटीग्रेट करेगा न्यू सिस्टम जो सपोर्ट करेगा इंजीनियर के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए और डिफेंस एक्टिविटीज के लिए, जो ड्राइव करेगा न्यू इनोवेशन एंड ग्रोथ. ये जो ऑर्डर है उसकी साइज और टेन्योर डील की पता नहीं है, सो बट ये पॉजिटिव रहेगा टीसीएस के लिए. नेक्स्ट अपडेट है मारुति सुजुकी के ऊपर. मारुति सुजुकी का जो एक्सपोर्ट है ये प्रीमियम एसयूवी ग्रैंड विटारा का वो स्टार्ट हो चुका है. कंपनी ने फर्स्ट शिपमेंट है ग्रैंड विटारा की वो लैटिन अमेरिका में सेल की है चेन्नई से, और कंपनी का एम है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे ग्रैंड विटारा मोर देन 16 कंट्रीज में, ओवरऑल लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशियन और जो नेबरिंग रीजन है उसमें. अभी ग्रैंड विटारा कंपनी नाउ एक्सपोर्ट की जो रेंज है वो 17 व्हीकल्स की है. ये पॉजिटिव रहेगा मारुति के लिए. करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से और टारगेट प्राइस है और 10,047. देन एमएनएम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है उनको सेटअप करने के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट पुणे में, और ये स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम होगी ईवीज की, उसके अंडर होगा. जो उनकी सब्सिडरी है वो इन्वेस्ट करेंगी ओवर नेक्स्ट 7 to 8 पीरियड्स के लिए, और जो सेटअप और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसके अलावा डेवलपमेंट और प्रोडक्शन अपकमिंग बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए. तो ये पॉजिटिव है एमएनएम के लिए. और बाय करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 1,495 है. देन नेक्स्ट अपडेट है इंडियन होटल के ऊपर. कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो ओपन कर रहे हैं बरागरा रिसोर्ट एंड स्पा होटल मनाली में, हिमाचल प्रदेश में. तो ये होटल अंडर कंपनी के सिलेक्शन ब्रांड के अंडर होगा. होटल की जो ऑक्यूपाइड है वो 33 रूम्स की साइज है, और वो ओपनिंग लाइन जो ओपनिंग है वो इन लाइन है IHL की जो स्ट्रेटजी है उसके साथ, जो स्ट्रेंथन और प्रेजेंस बना रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट में. तो ये ट्रिमेंडस टूरिज्म पोटेंशियल है, तो कंपनी के लिए अच्छा है. कंपनी के अभी 4 होटल्स है हिमाचल प्रदेश में और एक है जो अंडर डेवलपमेंट है. करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 347 है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से. बाटा के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अपॉइंट किया अनिल सोमानी को एज अ CEO ऑफ द कंपनी. डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी तक बाहर मतलब अनाउंस नहीं हुई है. मिस्टर सोमानी एक क्वालिफाइड CA एंड इसके पहले वो बाटा के पहले वो रिलायंस रिटेल सर्विस के साथ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड CFO थे. उनको ओवरऑल 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस, स्ट्रेटजी, कंप्लायंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और ओवरऑल जो रेप्यूटेड नेम्स है लाइक क्रोमा, वॉलमार्ट, मेट्रो कैश एंड कैरी. करंटली स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो 2071 है. देन नेक्स्ट अपडेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उनके बोर्ड ने अप्रूव किया है कि वो इंक्रीज करेंगे रॉयल्टी एंड सेंट्रल सर्विसेज अरेंजमेंट प्रोविजनल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, और ट्रेडमार्क लाइसेंस एंड सर्विसेज है यूनिलीवर ग्रुप का. न्यू अरेंजमेंट जो है इंक्रीज होंगी रॉयल्टी और सेंट्रल सर्विसेज, जो फीस है वो 3.45% से
इंक्रीज हो गया। जो उनका टर्नओवर है वो स्टैगर्ड मैनर में ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स में 2.65% था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। नेक्स्ट अपडेट है सन फार्मा के ऊपर। कंपनी एक्वायर करेंगी यूएस बेस्ड कंसर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी $576 मिलियन कैश में, और गेन करेंगे उनका एक्सेस और एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो ट्रीट करेंगे पैची ब्रांडनेस के लिए। नेक्स्ट अपडेट है कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया की जो एयर क्वालिटी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने सेंटर रन कोल इंडिया को बोला है कि वो जो सप्लायर सेल है कोल का इंडस्ट्रियल यूनिट्स का वो स्टॉप करने के लिए, और अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्सेप्ट थर्मल पावर प्लांट्स है, ये नेशनल कैपिटल रीजन के लिए है। देन टाटा मोटर से वो टॉक मतलब उनका बातचीत चल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ, जो रेस करेंगे एटलीस्ट $500 से लेके 600 मिलियन और उससे भी ज्यादा उनके फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस के लिए। ओवर ईयर उनको मतलब एक रिसीव मिला है $1 बिलियन टीपीजी राइस क्लाइमेट फंड, एंड अबू धाबी स्टेट है वो होल्डिंग कंपनी है ADQ, ये कंपनी ने अपडेट दिया है। देन नेक्स्ट अपडेट है वेस्टर्न क्रॉप के ऊपर। कंपनी को कल 92 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 123 करोड़ सेल ऑफ लैंड एंड सिविल स्ट्रक्चर, एंड उसमें एक्सक्लूड प्लांट और मशीनरी है गुजरात लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से। कंपनी को रिसीव हुआ है 31 करोड़ ऑलरेडी इन अक्टूबर में। देन JSW एनर्जी है उनको एक ऑर्डर मिला है 2 बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से, जो प्रोजेक्ट आया है SECI से। सो JSW एनर्जी जो आर्म है JSW रिन्यू एनर्जी, जो 5 उनको मतलब 5 उनको 2 बैटरी एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम प्रोजेक्ट का टोटल 500 मेगावाट एंड 1000 मेगावाट का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ऑर्डर मिला है। देन नेक्स्ट अपडेट है नेक्स्ट अपडेट है एफएल वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। बोर्ड ने अप्रूव किया है 1:1 का बोनस, और इसके अलावा 2:1 स्टॉक स्प्लिट एंड 17 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। देन जुबिलियंट फूड वर्क है कंपनी की जो फूड सर्विसेज है जुबिलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड, उन्होंने अनाउंस किया कि 900 करोड़ ओवर अ नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में एक्सपांड करेंगे डोमिनोज को, और जो पॉपियाइज आउटलेट है उनको। तो ओवरऑल वो इम्प्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान देंगे। उसके अलावा फूड कमिश्नरीज है, बैक एंड यूनिट्स है, और जो सर्विस रेस्टोरेंट किचन है उसमें वो ध्यान देंगे। सो करंटली जुबिलियंट फूड के नेटवर्क है 1701 और डोमिनोज के रेस्टोरेंट्स है अक्रॉस 371 सिटीज इंडिया में। कल कंपनी ने अपडेट दिया एक्सचेंज में कि वो कंपनी का जो होल्ड्स है एक्सक्लूसिव मास्टर ऑफ फ्रेंचाइजी राइट्स डोमिनोज पिज्जा में, वो डेवलप एंड ऑपरेट ब्रांड करेगा इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, और उनका प्लान है कि वो ओपन करेंगे 250 डोमिनोज स्टोर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स और 3000 आउटलेट्स पिज्जा चेन इन द मीडियम टर्म में। द नेक्स्ट अपडेट है BHEL के ऊपर। पूरा उनको ऑर्डर मिला है रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का और थर्मल UKI थर्मल पावर स्टेशन से। तो देन लास्ट अपडेट है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के नंबर्स आए थे। कंपनी ने 22% का राइज नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 303.6 करोड़ का, एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है ग्रो हुआ है 21.4% का 2048.6 करोड़। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.